Hello, everyone, and welcome to today's session on fertility enhancing surgeries brought to you by Apollo Fertility. We have Dr. Meenal Chidgupkar from our Solapur center to talk about this particular topic. To give a brief background about our doctor, she's an internal consultant and she is working with us as an fertility specialist. She has done an MBBS, MD, DGO, and also fellowship in reproductive medicine from England. So we all are very eager to hear from her, and we will look forward to hear from you, madam. So please go ahead. It's all yours. Namaste. I'm Dr. Meenal Chidgupkar from Apollo Fertility, Solapur. Today my topic is role of hysteroscopy and laparoscopy in infertility management. आज आज हम जानने वाले हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी में क्या मायना है. Indications for hysteroscopy in infertile women: sometimes there is submucous fibroid, endometrial polyp, uterine septum or adhesions, or chronic endometriosis. So in such cases, we need to go and do hysteroscopy and understand the conditions. The fibroids can be of many types. फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल मतलब यूट्रस के अंदर हो सकते हैं या यूट्राइन कैविटी में हो सकते हैं, यूट्रस के मसल में हो सकते हैं या यूट्राइन कैविटी में हो सकते हैं या यूट्रस के बाहर हो सकते हैं. इसके अकॉर्डिंगली फाइब्रॉइड्स का डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग रहता है. उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि वी आर रिमूविंग द फाइब्रॉइड्स फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम laparoscopically from outside. So accordingly we take the decision. But ये सारी चीजें अपने को 3D अल्ट्रासाउंड पे श्योरली समझ में आती है. बट इफ देयर आर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, समटाइम्स MRI करना भी जरूरी पड़ सकता है. फाइब्रॉइड्स जो सब सीरस रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनको कभी कभी ये IVF प्रोसेस में निकालने की जरूरत नहीं रहती, बट जो फाइब्रॉइड्स अंदर ये मसल के अंदर आते हैं और एंडोमेट्रियल कैविटी में आते हैं, उसको निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ हम भ्रूण जो गर्भ है वो छोड़ने वाले हैं ट्रांसफर के टाइम में. इसके लिए कौन से प्रकार का फाइब्रॉइड है वो जानना बहुत जरूरी है. डिफरेंट सोसाइटीज एंड डिफरेंट जर्नल्स में इसके बारे में अलग अलग और इम्पॉर्टेंट चीजें आती रहती है. फर्टिलिटी स्टेरिलिटी एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, उसमें भी ये फाइब्रॉइड्स के बारे में बहुत जानकारी दी गई है ऑलरेडी. सो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ये एंडोमेट्रियल कैविटी में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल पॉलिप. कभी कभी ये पॉलिप के वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है और गर्भ रहना मुश्किल हो सकता है. तो उस समय अपने को ये पॉलिप्स रिमूव करना हिस्ट्रोस्कोपी से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यूजुअली व्हेन 3D अल्ट्रासाउंड में हम एंडोमेट्रियल कैविटी में कुछ भी मास दिखे, तो वी एडवाइज पेशेंट्स टू गो अहेड एंड डू हिस्ट्रोस्कोपी बिफोर ट्रांसफर, so that the success of transfer will increase. एंडोमेट्रियम पॉलिप जो मैकेनिज्म है कि क्यों होते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स और वो इनफर्टिलिटी में कैसे उसका परिणाम होता है, उसमें इरेग्युलर एंडोमेट्रियल और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है. इन्फ्लेमेटरी चेंजेस टू एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स के वजह से भी ये पॉलिप्स डेवलप हो सकते हैं. समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव ये पॉलिप्स रहते हैं, इसके लिए स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती. फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एम्ब्रियो भी हो सकता है, सो एम्ब्रियो ट्रांसफर डिफिकल्ट हो सकता है. एंड इट कैन इंटरफियर विद द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द endocrine function, endometrial function, and increases this some kind of glycodelin बोलते हैं उसको, उसका concentration, and which inhibits this embryo transfer का success, and sperm binding
टू जोना पेलुसिडा ऑल्सो डिक्रीजेस। सो ये सारे कारण के वजह से एंडोमेट्रियल पॉलिप इफ सोनोग्राफी पे अपने को समझ में आया, देन वी हैव टू गो अहेड एंड डू द हिस्ट्रोस्कोपी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मीन्स बेसिकली जब इनफर्टिलिटी फीमेल फैक्टर्स के वजह से है और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्यूर और रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, तो हमको एनाटॉमिकल यूट्रस की एनाटॉमी का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और वो अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी से हो सकता है। जैसे मैरिज होने के बाद 3-4 साल के बाद भी प्रेगनेंसी ना रहे और हमको देखना है बायलैटरल ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं। ये ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं ये देखने के दो तरीके रहते हैं। एक एक्सरे पे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज HSG। एक सोनोग्राफी पे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SSG, दैट इज सलाइन सोनोहिस्टोग्राम। एंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड है कि जिसमें पूरा जानकारी अपने को आ सकता है, दैट इज डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, जिसमें हमको समझ में आ सकता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड ऑल्सो as I said about the to see the anatomical problems in the uterus. So if there is, just I mentioned about fibroids, then if there is endometrial polyp, or sometimes there is a septum. सेप्टम ये ऐसी चीज रहती है कि ये यूट्रस में नीचे से ऊपर तक पूरा सेप्टम हो सकता है या सिर्फ आधा सेप्टम हो सकता है, थिक सेप्टम हो सकता है या फ्लिम्जी सेप्टम हो सकता है, बट ये जानना जरूरी है। सेप्टम पे गर्भ रहा तो उसको ब्लड सप्लाई कम मिलने के वजह से उसके अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो जैसे ही सेप्टम रिमूव करने के डिफरेंट टाइप से हिस्ट्रोस्कोपी से जब हम देखते हैं कि इट इज अ फ्लिम्जी सेप्टम एंड इट इज नॉट वेरी थिक, नॉट मच ब्लड सप्लाई इनटू इट, then we can use the scissors and remove that septum. But sometimes when it is a very thick septum, तो रिसेप्टोस्कोप यूज करना जरूरी रहता है और उससे ये सेप्टम निकालना बहुत जरूरी रहता है। सेप्टम निकालने की सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सेप्टम निकालते समय वी शुड नॉट परफोरेट द फंडस। एंड उसके लिए बहुत एडवांस सेंटर्स में और एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ ये सर्जरी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये एंडोमेट्रियल सेप्टम भी इनफर्टिलिटी में बहुत मायने रखते हैं और इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड एज intrauterine adhesions. Sometimes when we see on hysteroscopy, we see multiple adhesions inside, and those adhesions are responsible for not having baby. तो ये adhesions निकालना बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी adhesions रिमूव करने के बाद भी रीअकर हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो इंट्रायूटेराइन अधीजन्स रहते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सीवियरिटी रहते हैं। समटाइम्स दे आर माइल्ड, समटाइम्स दे आर मॉडरेट एंड समटाइम्स दे आर सिवियर। सो फॉलोइंग हिस्ट्रोस्कोपी, माइल्ड जो रहते हैं तो हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद 50 to 80% cases they get pregnancy. If they are moderate, then the chances of having pregnancy after hysteroscopy reduces to 30 to 60%. And if they are severe adhesions, then after hysteroscopy the success of this uh, pregnancy is like just a 15 to 30%. So we have to understand this. Intrauterine adhesions क्यों हो सकते हैं? If prior excessive DNC हमने किया, कुछ लोगों का हुआ, तो उसके कारण भी अंदर का जो एंडोमेट्रियम है उसका स्क्रेपिंग बहुत सिवियरली हुआ हो तो यहाँ अधीजन्स हो सकते हैं। समटाइम्स ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन के वजह से हो सकते हैं और कुछ चीज़ों के वजह से ये अधीजन्स हो सकते हैं। और ये अधीजन्स बहुत सारे हैं तो उसको अशरमन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये अधीजन्स रिमूव करने के बाद भी, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देके और कुछ एडिशनल चीज़ करके ये नहीं होने चाहिए, इसके लिए ट्राई करना पड़ता है। दिस इंट्रायूटेराइन अधीजन्स आर important in cases of thin
एंडोमेट्रियम ऑल्सो व्हेन द एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम जब हम देखते हैं कि अंदर का अस्तर नहीं बढ़ रहा है, उस टाइम भी हिस्ट्रोस्कोपिकली ये अधीजन्स नहीं है ना, वो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है. Chronic endometritis जो है that is a symptomatic inflammation inside the endometrium, and some studies have demonstrated that it is associated with infertility. Uh, then chronic endometriosis, on hysteroscopy the endometrium contains micropolyps which are less than 1 millimeter. It is edematous and it demonstrates focal or diffuse endometrial hyperemia. So the based on this hyperemia means थोड़ा सा उसका जो पार्ट है वो थोड़ा रेडिश दिखना, तो ये हाइपरेमिया, इडिमा और लाइक माइक्रोपॉलिप्स ऑन द हिस्ट्रोस्कोपी जो दिखते हैं उससे हमको पता चलता है कि इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस. एंड ये जो हिस्ट्रोस्कोपी हम जो करते हैं यूजुअली वी डू इट in the proliferative phase or secretory phase and not in the menstrual phase. So उस टाइम का हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट अपने को पता करके लेना चाहिए. एंड वी यूजुअली सेंड दोज हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट एंड वी सी द पेशेंट इज इन द hormonal milieu, it is in sync with the menstrual cycle or not. Sometimes on hysteroscopy, there is a anatomical obstruction at the osteal level. So that osteal obstructions also we can remove with the hysteroscopy, and that is very beneficial for patients to become pregnant. सो कभी कभी ये अबॉर्शंस जो होते हैं, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबॉर्शंस के बाद कि पोस्ट अबॉर्शन के बाद इवन इफ यू टेक tablets medicines, you have to confirm on ultrasound after bleeding and everything that everything has cleared or not. कभी कभी जैसे थोड़े parts रह गए inside, and if they get infected, and then also there is a chance of adhesions or endometritis. So everyone has to be very careful कि even if we take tablets, uh, mtp tablets to remove the unwanted pregnancy, after completion of 15 days 20 days we have to, and the next when the period comes we have to repeatedly check our ultrasonography to see there is no remaining parts of conception inside the uterus. हिस्ट्रोस्कोपी एंड आईवीएफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है. एंड जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले हिस्ट्रोस्कोपी होना हम यूजुअली अच्छा समझते हैं, एंड सोनोग्राफिकली जब 3D में कुछ हमको प्रॉब्लम दिखे तो हम हिस्ट्रोस्कोपी तो ज़रूर करते हैं. सो देर आर ऑलवेज like discussions regarding is there is a need of hysteroscopy for every IVF cycle, and is hysteroscopy increases the chances of success of IVF. So certain studies have discussed about this, and they've said if 3D ultrasound, and in that if we see everything is all right, there is no problem in the uterus, then we may defer the hysteroscopy, and then we can go ahead and do embryo transfer. But the first failed IVF cycle or implantation failure, then prior doing the second cycle, it is better to do hysteroscopy prior to that. Then the conclusion wise, I'm telling hysteroscopy may play an important role before, in conjunction with assisted reproductive techniques, to help infertile women and couples achieve their goals of pregnancy and birth of a child. So hysteroscopy a very important tool nowadays. It is very important for the gynecologist office hysteroscopy, that is in OPD premises. The hysteroscopically the internal structures of the endometrium are checked, and even now
the biopsies are taken hysteroscopy guided, so that from the exact site we can take the biopsy. Now, other important fertility enhancing surgical method is laparoscopy. Laparoscopy confirms the tubal patency, so the chromoperturbation which we do. So now, as I said, that SSG, HSG, and hysto laparoscopy I would give, or everyone is giving importance to this gold standard method of hysterolaparoscopy. So in in the 1990s, the laparoscopy was the final step in the routine diagnostic approach for the evaluation of the infertile couples. Currently, advancement of a new perspectives in ART, the process of evaluating infertile couples has changed, and most widely accepted approach to infertility is based on diagnosing an exact etiology. The scope and the sequence of modern infertility evaluation focus on the cost effective and most efficient tests. So, the investigation of the infertile couple has to be rapid, inexpensive, and using minimally invasive tests. The focus of the treatment for infertility has shifted from the systematic correction of each identified factor to applying the most efficient way, which may be ART in certain times. Now, the basic investigations is of infertility, we have to see mid-luteal phase progesterone, HSG, conventional semen analysis, and infertility is described as unexplained when standard investigations are normal. The laparoscopy is reserved for the further diagnosis or may be used in the combination with endoscopic surgeries. If we are doing it, then we do it. ART may be performed on suboptimally investigated couples and reduce need for reproductive surgery as a primary surgical treatment for infertility. So, laparoscopy as a diagnostic tool in infertility has diminished markedly, and today we rarely perform diagnostic laparoscopy in infertile women. That was discussed in 2017. The benefits of diagnostic laparoscopy with no risk factors for the intra-abdominal adhesions, and they are very small, and nowadays the laparoscopy procedures also so advanced that no much trauma, and patient in the morning they can come, and by afternoon evening they can leave. So there are two ways of thinking about this laparoscopy. Laparoscopy is invasive. So we have to think whether we need laparoscopy for ART procedures. If there are no identifiable causes, or there are no anatomical factors, or there are no factors sonographically detected, we can straightforward avoid laparoscopy, go ahead with the IVF cycle, and do hysteroscopy, and then do the embryo transfer. The indications for this laparoscopy are what? Like certain times when HSG is inconclusive, or HSG shows one-sided tubal block or bilateral tubal block. So in those cases, before starting ART, we have to confirm that block is sure, or it is because of tubal occlusions. So in those cases, we go ahead and do hysterolaparoscopy. When there are big fibroids, when the fibroids are intramural and obstructing endometrium, and certain times when there are hydrosalpinx, or there are endometriosis, or there's other big ovarian cysts which are problematic, when uh, they if we start the ART without doing the laparoscopy, then we have to go ahead and do laparoscopy. Even for the IUI, if we have done HSD and we are giving IUI treatment, 1-2 cycles are failed, then we have to understand, is there any other factor? Is there any adhesions inside abdomen? And to understand all those things, we have to go ahead and do laparoscopy. So in those cases we have to go for the laparoscopy, and laparoscopy is very important when there is ectopic pregnancy, which might happen in IVF cycles.
certain cases when there's a failed IVF also, we have to understand there's any reason inside the abdomen, and we can do those laparoscopy. So laparoscopies can also be diagnostic or therapeutic. If we know there is any problem, to remove that problem, we do the laparoscopy, or whether we are doing it to understand what is the exact problem. So diagnostic laparoscopy can be avoided in older women or multiple infertility factors or severe male factor. So these women are better served by IVF and instead of a surgical approach to them. The presence of endometriosis and adhesions does not markedly influence the effectiveness of IVF. And even in the endometriotic surgeries, when there are multiple surgeries done already and the patient is not complaining of severe abdominal pain, and the patient is for IVF, we can straight away go with the IVF cycle rather than putting that patient again for laparohysteroscopy. What this laparoscopy gives us a general view of pelvic organs. We understand the mild minimal endometriosis, which are not detected on TBS or HSG, and that can be treated laparoscopically also then and there. We can understand some bowel or pelvic adhesions. The milder forms of distal tubal occlusive disease we understand, and femoral agglutinations or the femoral phimosis, and we can see the patency of the tube chromoperturbation, spillage on the both the sides. If adhesion or endometriosis are found during diagnostic laparoscopy, the patient has been consented. An operative laparoscopy in the same setting can be done. Laparoscopic treatment is done for the stage 1 and stage 2. The pregnancy rate improves with the laparoscopic treatment. I always prefer laparoscopy than HSD because HSD sometimes give false positive results or the false negative results. The tubal blockages are not understood, the distal blockages on HSG, then obstructions are diagnosed by laparoscopy and the most likely are the true positive. The prognosis of tubal obstruction is poorer, and HSG will not actually remove it. And if there are chances in the laparoscopy, we can see how it can be done. So operative laparoscopies are like those are for the treatment for infertility, to enhance the outcome of IVF, or sometimes for the preservation of fertility. Laparoscopically we can take out some ovarian tissues and cryopreserve it. In infertility, when there is a severe polycystic ovarian syndrome and we have to do bilateral ovarian drilling, there we can use that. Then adhesiolysis, so tubal reanastomosis can also be done laparoscopically. Distal tubal obstructions can be removed, and if there is hydrosalpinx, pyosalpinx, and any cysts there, we can remove. We can do myomectomies, adenomyomectomy, then treatment of endometriosis, treatment of hydrosalpinx, and various ovarian surgeries that also can be done with this laparoscopy. So these are the general overall view about this laparoscopy and hysteroscopy. These are the fertility enhancing surgeries. So I think you have understood a little bit about it and you have a lot of questions regarding that. So I would like to answer your questions. So the first question is, if the fibroids are outside the uterus, are such fibroids pose a risk to conceive? See, as I told you, fibroids are of many types. They can be subserous, they are outside the uterus, they are intramyometrial,
they are in the uterine muscles, and some are popping inside the endometrial cavity. Mostly this subserous fibroids which are outside will not uh, cause any problem in the uh, in that lady to conceive. But if the fibroids are intramyometrial or they are popping inside the endometrial cavity, they are not good. What precautions need to be taken after the procedure is done? So after the myomectomy, the doctors will advise you according to your fibroid size. So they will definitely guide you post operatively how to take the precautions. So, what is done to remove the endometriosis? Endometriosis um are of different types for you to understand. There are different grades. They can be mild, they can be moderate, they can be very severe, and there can be a big endometrial cyst also. So, accordingly, laparoscopic surgeons will decide how to go ahead with those cases and they will operate you. Uh, so all the so all of you who have listened to this important topic of fertility enhancing surgery, I would like to say it is just an understanding of laparoscopy and hysteroscopy, and surely we Apollo Fertility Clinic laparoscopic surgeons, doctors would guide you regarding your problem and definitely give you the best results after the surgery. Namaste.